Hi guys, welcome back to the Diwali special episode of the El Clasico Football Hub. First of all, from the team of El Clasico Football Hub, a very happy Diwali to all of you. कुछ लोग I know आज भी celebrate कर रहे होंगे. So a very happy Diwali to all of you. Now speaking about firecrackers, we have to talk about the competition that delivers the most firecrackers to the football fans. So we have Champions League match day 3 upon us this week. Quite a lot of interesting fixtures. Aditya, what do you say? I think let's start with the juiciest of the fixture this time. I think this is Real Madrid versus Juventus. So, क्या लगता है आनंद? Will has the old lady enough firepower to create an upset this time? I think Juventus, you could argue he has lost the legacy touch. Was a legacy club, but they have lost their touch now, thoda sa. But still, having said that, I think tough fixture होगा. I don't expect a high scoring match. मुझे लगता है यूवेंटस हमेशा tactically defensively very strong team है. I think they also have a lot of good players in the name of Yildiz एक अच्छा player है. You remember कि मैंने एक बार बोला भी था देखो एक अच्छा player emerging player है. I think other than that Vlahovic उनका अच्छा player है. So overall मुझे लगता है it would be a tough fixture, but I still expect Madrid to sail through. Uh, Not very comfortably. I think I expect Juventus to score, but मेरे को लगता है Madrid will eventually win. What's your take? I think same. Players like Jonathan David offer that flair, attacking flair as well to Juventus, right? While they are Hmm. very systemically, defensively solid team, but I think उनके पास वो एक tinge of firepower है in the form of Jonathan David to create those upsets. And Madrid is still figuring out things. मुझे ऐसा लगता है. Every time I see a match, I see an opening for a team to score, right? So Hmm. teams like Juventus who know this game well, who know this championship well, right? They will not come out there with submission. They will come out कि हम जाएंगे Madrid के home पे and we can score there as well, right? They still consider themselves to be part or within the ethos of this championship. So I think while it will not be a straightforward match for Madrid, they will suffer, but I expect them to sail through uh, with a decent goal margin, not a very healthy goal margin, but a decent goal margin. So probably like a 3-1 or a 2-0. एग्जैक्टली दो गोल का डिफरेंस मैंने इमेजिन किया हुआ था आई थॉट 2-1 सॉरी 3-1 एक दो गोल का डिफरेंस एंड सेकंड गोल कमिंग ऑफ लेट दैट्स हाउ आई एम इमेजिनिंग दिस गेम टू गो आउट I think मेरे लिए आई थिंक जो मैंने सोचा हुआ था आई थिंक यूवेंटस इज गोइंग टू स्कोर सो आई थिंक आई दे विल स्कोर 1 बट वी माइट स्कोर 2 सो मेरे को 2-1 लग रहा है बट अदर देन दैट आई रियली वांट टू स्पीक अबाउट द लाइनअप दैट इज एक्सपेक्टेड मुझे ऐसा लगता है स्पेशली फॉर द एल क्लासिको चाबी अलोंसो फिर से वो मिस्टेक नहीं करेगा टू ट्राई अ न्यू लाइनअप तो आई थिंक जो लाइनअप अभी एल क्लासिको में खिलाने वाला ही वुड हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट दैट और वही लाइनअप मुझे लगता है यूवेंटस में हमें देखने को मिल सकती है अ की क्वेश्चन मार्क इज डीन ह्यूसन का फिटनेस वो वेदर स्टार्ट करता है वो फिटनेस उसकी पूरी हो पाती है नहीं हो पाती है उस पर काफी डिपेंड करेगा बट मुझे लगता है वी माइट get a glimpse of what to expect in El Clasico in terms of tactics and lineup from the Madrid side. could go both ways in fact क्योंकि while Barca has a good difference between El Clasico and the match with Hmm. Olympiacos, but you have lesser of that difference, right? And the days are very numbered between that. तो मुझे लग रहा है Hmm. कि there is also a chance that you might rest a player or two. Uh, if you see that Juventus is going decently well, you might rest a player or two in Hmm. that case. क्योंकि तुम्हारे Probably पास as the match टाइम progresses, हाँ. करेक्ट Hmm. करेक्ट Hmm. करेक्ट क्योंकि मुझे लगता है दैट्स द पॉइंट स्टार्टिंग 11 तो जैबी अलोंसो में रिस्क नहीं लेगा क्योंकि हेटाफे के जो लास्ट मैच था उसके अंदर रेस्ट किए थे काफी प्लेयर्स विनी रेस्ट किया था आर्डर रेस्ट किया था आलाबा स्टार्ट किया था बट हैविंग सेड दैट मुझे ऐसा लगता है टफ कपल ऑफ वीक्स अहेड नॉट जस्ट बारसा उसके बाद अगले वीक लिवरपूल भी है सो विल हैव टू मैनेज प्लेयर्स उनकी फिटनेस उनका प्लेइंग टाइम बट ऐसा लग रहा है कि यूवेंटस का मैच है बट देयर इज स्टिल वन आई ऑन एल क्लासिको तो करेक्ट थोड़ा सा करेक्ट सो लेट्स सी क्या होता है आई थिंक I one thing that I need to figure out, right, in this Real Madrid team is कि उनका गेम प्ले ऐसा है that they are getting so many uh, penalties, right?
is that part of their tactic is something that I want to understand, right? वो ball progression missing है, but then I see a lot more penalties for Madrid this time, and it's no जितने मिल रहे हैं और जैसा गेम प्ले दिख रहा है मेरे को, ऐसा नहीं है कि कोई कंट्रोवर्शियल पेनल्टी है. क्रेडिट्स वेयर ड्यू, आई डोंट थिंक दोज आर कंट्रोवर्शियल पेनल्टी एज सच. सो इन दैट केस मुझे लग रहा है उनका गेम प्ले ऐसे चल रहा है दैट दे आर क्रिएटिंग सो मच threat maybe in the final third within the box, inside the box. Uh, given you have players like Mbappe, who's a Ballon d'Or, contender right now. So वो इतना threat create कर रहे हैं that you are compensating for uh, those, as you said, problems in the build up through this threat that you're posing in the box. So I think that is something to look out for, and I think that is some strategy maybe that Zabi also has in mind. I would like to actually quote a stat here. मैं कहीं ना कहीं पढ़ा था. I'm just trying to search as well parallelly. तो वो quote, हाँ, possession won final in the final third per match. Madrid का है 5.20, and which is the highest in La Liga, and Barcelona is sitting somewhere close to 4. So 5.2 times they are winning possession in the final third. So I think presence in the final Yes, third Madrid का owing to the gameplay, owing to the tactical build up वो ज्यादा है, which eventually translates to more penalty, more correct. fouls in the box, or more vulnerability in the box. So I think इस उस sense में I think Xavi has done good. Tactically मेरे को अभी Madrid better drilled लगती है, but still not yet fully implemented, I'll say. वो अभी ना system अभी full proof implement नहीं हो पाया. Agree. In fact, good match for the fans. They can look forward to the match. It won't be an easy go. And a team like Juventus, by the sheer fact that they come with that ethos of championship, they can create an upset. So a still good still match give for the me fans. still gives me nightmares of 2014-15 season जो चैंपियंस लीग Correct. सेमीफाइनल में It could यूवेंटस में have been a El मोराटा Clasico ने गोल final. मारा. Correct. Yes, so but still, having said that, I think अगर यूवेंटस जीत भी जाता है, it would still be considered as an upset. So Correct. let's looking forward to the match. But talking about upsets, मैं चाहता हूँ एक और upset हो, ओलंपियाकोस से हो at the क्या स्पॉटिफाई कैंप नु में हो रहा है, कहाँ हो रहा है इस बार? नहीं, अभी भी हमारे एस्टाडियो ओलंपिक स्टेडियम में हो रहा वो मैं पता नहीं लगता वो स्टेडियम है, चर्च है, क्या चीज है वो? है. यार उसमें एक मंदिर का घंटा सा लगा रहता है. आई डोंट नो What's बट your take on the Barcelona's fixture against Olympiacos? So if I personify this Barcelona team, right? इस पूरी टीम को अगर मैं एज ए पर्सन इमेजिन करूं, so this team is coming off an injury. The whole team is either tired or the whole team is coming out of an injury. At least unka midfield or unka attack. So that's how, if I personify this Barcelona team, that's how I look at them right now. So Pedri is very tired, having played almost all the matches. Spain के लिए भी during the friendlies as well as Barca के लिए. I don't think उसने कोई भी match rest out किया है, right? De Jong is decently back, so okay, that's fine. But Fermin Lopez is out or coming from injury. Dani Olmo is out. Ferran Torres is coming back. Rafinha is coming back. Lewandowski is out. Yamal के लिए बोल दिया है कि he is not good enough for 90 minutes, right? So your entire midfield and your entire attack is coming off from an injury or is injured. So that's how I personify this Barcelona team, and that is the only reason why I will have to watch this match for the whole 90 minutes, right? क्योंकि वेलेंसिया ने इसे बहुत अच्छे से उसे एक्सप्लॉइट किया था. अभी जिरोना ने आई थिंक ऑलमोस्ट पुल्ड ऑफ अ ड्रॉ, राइट? So I think that's the reason I think that this match could go either ways. And Champions League में every team I believe possesses that bare minimum lethalness, right? That they can come to your ground and create an upset. So that's why I would say कि ये match completely closed नहीं है. At the same time, if Yamal gets in his flavor, वापस आ गया, second match है उसका, right? Similarly, Fermin Lopez, while coming off an injury, was pretty active. If Rafinha का पहला मैच हो जाता है, so again वो एक bare minimum performance दे देगा. Ferran Torres coming back, okay, Ferran Torres, I don't want to comment more, but ठीक है, he can provide you a goal or two sometimes, right? So, or Pedri will anyways play the way it goes. So all in all, while the team is tired, but I think they have enough baseline firepower to win the match. That's how I see the match. What's your rival take on this? See, यार
I'll look at it from two ways. One is जैसे तू बात कर रहा था from the players perspective, tactics perspective. One is the motivational level वाला perspective. मुझे ऐसा लगता है player perspective में it's important to see कि क्या मतलब lineup शुरू करेगा Flick. I think he also might think कि कुछ players injury से आ रहे हैं, whether he should rest them for Clasico or not. Olympiacos इतना बड़ा fixture नहीं है. बट एट द सेम टाइम तुम न्यूकासल वाला मैच ऑलमोस्ट हार सकते थे, ड्रॉ भी कर सकते थे, पीएसजी वाला मैच हार भी गए, सो थोड़ा प्रेशर वो उस साइड उस सेंस में उसके ऊपर होगा ऑलरेडी. सेकेंडली मुझे लगता है प्लेयर्स लेवल पे ऑन लाइक 11 वर्सेस 11 यू आर गोइंग टू बीट ओलंपियाकोस एनी विच वे. बट मेरे को लगता है मोटिवेशनल लेवल पे एक एक मैं बार्सिलोना का जैसे उन्हें पर्सोनिफाई किया ना, मैं बार्सिलोना का पर्सोनिफाई ऐसे देखूंगा, एक घायल शेर है, ठीक है, थोड़ा ना भी घायल है, एंड एक बहुत बड़ा फिक्सचर आ रहा है, एंड दे वुड वांट टू मेक अ स्टेटमेंट. आई थिंक मोटिवेशनल लेवल पे बार्सिलोना काफी चार्ज अप होगा, एंड आई 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 थिंक इट कुड बी अ राइट, आई थिंक इट कुड बी अ 5-5-0 और 5-2 और 5-1 6-1, ऐसा इस तरह का स्कोर लाइन हो सकता है. बट अगेन बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द स्टार्टिंग लाइनअप. Correct, correct. In fact, both the matches, right, Madrid और बारसा का, I think दोनों comparatively straightforward matches हैं दोनों teams के लिए, but they hold significance because there is an El Clasico present, right? So, so again, a good fixture to look forward to. तो जैसे What's your बोर्ड से what's पहले your प्री बोर्ड होते थे ना, वो वाला लग रहा correct, है फीलिंग अभी. correct, correct, correct. कितनी तैयारी है कि एग्जाम कर लेंगे, but yeah. So बट what's your थोड़ा सा take? मैड्रिड बारसा में ऐसा है कि मैड्रिड का शायद थोड़ा आईसीएससी वाला बोर्ड है, तो बार्सिलोना का थोड़ा सीबीएसई बोर्ड है, थोड़ा सा I would beg to डिफिकल्टी differ, लेवल. but ठीक है, we'll talk about it. टॉकिंग अबाउट स्कोर लाइंस, व्हाट्स योर टेक ऑन द स्कोर लाइन? तो क्या लगता है क्या स्कोर? So I think any team will score goals against Barcelona this season. Any team and every team will. So I think 2 goals for sure against them. But I think Flick will not risk it. He will definitely go for the kill. So he will have the best available lineup out there. Because abhi they need that 3 games. They cannot lose 2 games in a row. So 4-2. चलो आदित्य, आई थिंक ये तो होगी मैड्रिड और बार्सिलोना की बात, बट व्हाट इज द वन फिक्सचर दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अपार्ट फ्रॉम मैड्रिड एंड बार्सिलोना's मैचेस? So apart from Madrid and Barcelona, I would, as a La Liga fan, also want to follow what Atletico Madrid is doing against a Premier League top of the table side Arsenal, and that is going to be a banger fixture according to me. In fact, is round ka probably the most crucial fixture to look out for. Largely given Atletico Madrid ne Liverpool ko did not have them an easy win for them, right? They provided that fight back, right? And Simeone again will not go ahead कि 2 matches in a way in a row lose करना चाहेगा, even though वो Arsenal के against उनके home पे, right? So plus Atletico Madrid is getting back and finding their mojo back is how I see them right now, right? राइट. So I think Atletico Madrid will create a lot of trouble for Arsenal at their home. Arsenal is not accustomed to facing a side like Atletico, who उनको आदत है प्रीमियर लीग के अटैकिंग माइंडसेट टीम्स को खेलने के लिए और मोर फिजिकल टीम्स को खेलने के लिए. एटलेटिको इज रेडी टू सिट टाइट एंड ओनली अटैक इन पैचेस, राइट? एंड दोस पैचेस में जो अटैक होंगे वो काफी डेडली होंगे. सो आई वांट टू सी हाउ आर्सेनल रिएक्ट्स टू इट. नेट नेट अ वेरी good tight game. At the same time, I do feel that Arsenal has that little bit of edge given their home and that quality wise भी थोड़ा सा Arsenal better जा रहा है. So I will give them the edge. But for me, it's like last minute goal for Arsenal to win. However, my overall idea is 2-2, where the Atletico absorbs the pressure. Arsenal के home पे जाके Atletico will pull off a draw, and this will go out as a message that La Liga teams out there has got it over the Premier League sides. फेयर फेयर. द वे आई सी इट, मैं ऐसे देखता हूँ कि इट्स अ बैटल ऑफ टू हराम बॉल्स. ठीक है, दोनों के वे ऑफ प्लेइंग इज वेरी वेरी फिजिकल, वेरी डिफेंसिव. तो मैं पर्सनली बहुत हाई स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. आई अग्री विद योर पॉइंट कि एटलेटिको ने लिवरपूल को बहुत अच्छा कंपटीशन दिया था, एंड नाउ इवन मोर सो अब एटलेटिको इज गेटिंग देयर मोजो बैक, तो इवन मोर सो अब थोड़ा ट्रबल हो सकता है आर्सेनल के लिए. But I still expect कि Arsenal is going to win. I'm expecting a very KG win, like a 1-0 victory for Arsenal.
So that's about Arsenal versus Atletico. What about you, Anand? One fixture outside of Barcelona Real Madrid that you're looking forward to? Mm, I'll actually build on the patriotism for La Liga. So I'll look forward to Villarreal versus Man City. Villarreal के home पे match है. I think atmosphere अच्छा हो सकता है काफी. Villarreal away generally is very packed, which generally is very hostile, right? Something Barcelona is going to avoid apparently this season. Hashtag unfair. बट आई थिंक मैन सिटी के लिए काफी ट्रबल्स हो सकती हैं विलारियल पे. मार्सेलिनो उनका कोच काफी गुड है टैक्टिकली, एंड अ लॉट ऑफ देयर टैक्टिकल बिल्डअप रिलाइज ऑन काउंटर अटैक्स. एंड आई थिंक मैन सिटी की जो बैकलाइन है वो वल्नरेबल अभी भी है. ये पिछले सीजन भी थी, अभी भी है. आई थिंक देयर मिडफील्ड एंड अटैक थोड़ा बहुत शॉर्ट हो रहा है, बट आई थिंक बैकलाइन उनकी अभी भी वल्नरेबल है. सो आई थिंक इन दैट सेंस मेरे को लगता है विलारियल इज गोइंग टू क्रिएट चांसेस. Might seem like an upset, but I think Villarreal is going to pull off a win here, not just draw. मुझे लगता है it can be like a 3-2 victory for Villarreal. Villarreal. What's your take? I think every time I watch Villarreal, मुझे लगता है if I would not have been a Barcelona fan, right? और अगर मैं ला लीगा में कोई एक टीम फॉलो करता, I would have loved to support Villarreal, right? Hmm. So every time I think about Villarreal, वो biasness आ जाती है. And their home feels like Dortmund का home, ऐसे full हाँ. yellow submarine type वाला vibe, right? So I Hmm. think with that atmosphere, Manchester City won't have it easy, right? I Hmm. agree there for sure. At the same time, is their quality good enough for Manchester City? That is something that kind of troubles me or makes me think that it won't be Villarreal pulling off an upset. Draw is the best favored result that they can get. At the same time, I think it will be Manchester City taking off the 3 points against Villarreal. लेट्स सी. आई थिंक एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनका. जेरार्ड मोरेनो जो अभी तक इंजर्ड था स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में, ही इज नाउ कमिंग बैक. सो आई थिंक अटैक वाइज भी थोड़ा सा एम्पावर्ड है विलारियल, बट विल हैव टू वेट एंड वॉच कि वो कितना फिटनेस पे है, कितना अच्छे से इंटीग्रेट कर पा रहा है स्टिल. बट दे स्टिल हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ गुड अटैकिंग प्लेयर्स. पेपे उनका अच्छा प्लेयर है काफी. सो एनी विच वे विलारियल इज ऑल्सो डूइंग वेल इन ला लीगा. आई थिंक थर्ड है Hmm, अभी करेंटली, अबव एटलेटिको. सो correct. लेट्स सी. We have a difference of opinion, but let's see. Yeah, I think Villarreal have to be that yellow submarine, as an Hmm. actual submarine in order to take that onslaught of Haaland, who has scored what Hmm. like 9 or 10 matches in a row. Hmm. So I think Hmm. वो वाला अगर उन्होंने किसी तरह उन्होंने अगर हालैंड को शट ऑफ कर दिया, then they have it. Else it's gonna be, अगर हालैंड अपने फॉर्म पे रहा तो आउट भी हो सकता है. So let's see. Hmm. So this was the preview of the Champions League match day 3. Do drop in your predictions in the comments and like the video and subscribe the channel if you haven't already.